Hello students, today we will discuss about pharmaceutical jurisprudence uh, and now start to a new chapter, the narcotic drugs and psychotropic drugs. These drugs are also known as NSAID drugs, and the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Bill passed in 1985 was introduced in the Lok Sabha on 23 August in 1985. It was passed by both the houses of parliament, received assent from then President Gyani Jail Singh on 6 September in 1985 and came into force on 14 November in 1985. The narcotic drugs are also known as NDPS Act has since as amended thrice time. The NDP Act has due to changes in law and also known as amendment and amendment in 1988, 2001 and 2014. Due to increase in the number of drug abuse, the central government passed the Narcotic Drug and Psychotropic Substance and rules in order to curb men's threat to the physically and moral health of the human race, particularly the youth. The act was passed, conciliated amended the law relating to narcotic drugs to make a stringent provision for the control and regulation of operation relating to narcotic and psychotropic substances and concern matters. Most significant features of the act is to exemplary matters. Most significant are also known as punishment provide for most of offenses. In some cases, imprisonment up to 30 year in addition to fine of more than 3 lakh of rupees. For most of the offense, minimum term of the imprisonment of minimum amount of fine provided and consequences once offense is proved, the court has a no option but to award at least the minimum penalty. Understood? हमारी जो सरकार ने एक ड्रग्स नारकोटिक ड्रग्स बनाई है, ठीक है, जो नारकोटिक ड्रग्स में जैसे ओपियम आता है, अफ़ीम, गांजा, ठीक है, कैनबिस हो गया, ठीक है, जो ये ड्रग्स हैं और ये हमारी थोड़ा थोड़ा इनका मेडिकल यूज़ होता है, ठीक है, तो यूथ में ज़्यादा यूज़ होने के कारण ज़्यादा लोग इनको लेने लग गए, ठीक है, तभी ये इनको सरकार को ये एक्ट बनाना पड़ा, ठीक है स्टूडेंट। एंड लेट्स वी जैसे कि आप मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो अल्प्राजोलम थी, ठीक है, अल्प्राजोलम हमें एक नींद के लिए या हाई बीपी के लिए जहाँ किसी हार्ट के पेशेंट को दी जाती थी, ठीक है, उसको नॉर्मल नींद आने के लिए, ठीक है, वो एक गोली लेता था और आराम से चैन से सो जाता था। और नाउ डेज़ में यूथ ने क्या किया, यूथ ने या किसी भी और पर्सन एडिक्शनल पर्सन ने एक गोली से 10 गोली लेनी शुरू कर दी, तो ओवरडोजिंग के कारण जो उसकी जो ज़्यादा यूजिंग थी वो बढ़ती रही, बढ़ने के कारण सरकार को ये एक्ट पास करना पड़ा, ठीक है। ये होती है, कल्टीवेशंस भी होती हैं, ठीक है, एंड मेडिसिन्स भी मैन्युफैक्चर होती हैं, पर वो उन लोगों को मिलती है जिनके पास ये लाइसेंस होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। बैकग्राउंड ऑफ द नारकोटिक and also known as India had no legislation regarding the narcotic until in 1985. Cannabis smoking in India has been known as since at least 2000 BC, at first mentioned in the Atharvavedi. In 1893 appointed
The Indian Hemp Drugs Commission was an Indo-British studies of cannabis uses of India. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे इसके जो मेयरमेंट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जो हमें दिए गए हैं नारकोटिक एंड एनडीपीएस ड्रग्स की रिगार्डिंग, जैसे कि कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शन बाय वेरियस ऑफिसर्स स्टेट गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज़ अंडर दिस एक्ट अंडर एनी अदर लॉ for the time being in force in connection with enforcement of the provision of this act, obligation under the international conventions, assistance to the concerned and authorities in foreign countries and international organizations to facilitate coordination and universal action for prevention and suppression of illicit traffic in narcotic drug and psychotropic substances. Understood. And next we go on identification, treatment, education, aftercare, rehabilitation, and social reintegration of addicts. Such other matter as the central governments of necessary and expedient for the purpose of this act preventing and to narcotic drug and psychotropic substance illicit in traffic therein. Understood. And next go in the report of the report of the commission produced at least 30 to 81 pages long. The testimony for almost 1200 doctors, coolies, yogi, fakir, had and lunatic assailants and tax gatherers, smuggler, army officer, hemp dealer, ganja place operation and the clergy. Understood. मीनिंग क्या है नारकोटिक का, मेडिसिन के हम इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे, जैसे कि डेफिनेशन आता है इसका, डिफ़ाइन नारकोटिक ड्रग्स एंड डिफ़ाइन एनडीपीसी. ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द ड्रग is as a codeine, methadone, and morphine that in moderate doses dulls the senses, relieve pain, and induces profound sleep, but in excessive dose causes stupor, coma और convulsions. ठीक है स्टूडेंट्स, जो नारकोटिक ड्रग्स हैं हमें जो हमारी रिलीव पेन करती हैं, ठीक है, हमें इंड्यूस प्रोफाउंड स्लीप करती हैं. जब हम एक्सेसिव डोज लेते हैं तो वो स्टॉप पर कॉज करती हैं, जैसे कोमा भी चले जाते हैं स्टूडेंट पेशेंट्स. ठीक है, ज़्यादा कन्वर्जन्स आ जाती हैं. ठीक है, जो इसकी मेन डेफिनेशन है यही बनेगी, that a drug as a codeine, methadone and morphine that in moderate doses dull the senses. ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट क्या है, an act that conciliate the amendment the law relating to narcotic drugs. ठीक है, चेंजेस आती रहती हैं लॉज में, जैसे कि मान लीजिए आज अफीम बढ़ रही है, अफीम कल को किसी और कोई चेंजेस कर रही है तो वो एक्ट पास होगा, तो उसको हम बोलते हैं अमेंडेंट ड्रग्स. टू मेक अ स्ट्रिंजेंट प्रोविज़न फॉर द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ ऑपरेशन relating to narcotic drugs and psychotropic substances. Let's forward in the next point. To provide for the forfeiture of property derived from or used in illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances. To implement to provision of the International Convention of Narcotic Drug and Psychotropic Substances. प्रिमिलरी में क्या है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कॉमन सेंट. दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज ए नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट इन 1985. It extends to the whole of India and it applies also to all citizens of India and outside of India. ये जो रूल बना है 1985 में बना था. ठीक है, और ये पूरी होल इंडिया पर अप्लीकेबल होता है. जहाँ कोई भी फॉरेनर आते हैं, ठीक है, घूमने के लिए, तो उनके लिए भी लागू होता है. तो जो भी रूल है सभी जो भी इंडिया में है उस पर ये लागू होता है.
to all person on ships and aircraft registered in India whenever they may be. It shall come into the force on such date as the central government may by notification in the officially gazette officer appoint on different dates appointed different provision of this act and for different states and reference in such a provision to the common cement of the act shall be constructed in relation to any state of reference to the coming into the force of that provision in that states. आगे हमारी जो उसकी कैटेगरी है हम थोड़ा सा ड्रग्स के बारे में पढ़ लेते हैं अभी कौन कौन से कहाँ कौन से प्लांट से ये बनती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि कैनाबिस आती है, जैसे हम गांजा बोलते हैं, ठीक है, अफीम गांजा भांग, ठीक है, हम उसको कैनाबिस बोलते हैं। कैनाबिस also known as hemp tree. It means charas that is separated resin in whatever from whether crude or purified obtained from the cannabis plant and also include the concentrated preparation and resin known as a hashish oil or liquid hashish and cannabis also ganja that is flowering of fruiting tops of that cannabis plant excluding the seeds and leaves when not accompanied by the top by whatever name they may be known or designated and next point one is known as any mixture with or without and any natural material of any of the above form of cannabis or cannabis on drink prepared therefrom known as. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन पॉइंट इज कोका डेरिवेटिव. Coca derivative is the topic is crude cocaine, that is an extract of coca leaf which can be used directly or indirectly for the manufacture of cocaine and icogonine and all the derivative of icogonine from which it can be recovered. Cocaine, that may be methyl ester of benzoyl icogonine and its salts. And next point is also known as it's all preparation containing more than 0.1% of cocaine. Understood. And next one is known as manufactured drug. Manufactured drugs means all coca derivative, medicinal cannabis, opium derivative and poppy straw concentrate. And next one point is any other narcotic substance or preparation which the central government may having regard to the available information as to its nature or its decision. If any under any international convention by notification the official gazette declare to be a manufactured drugs. And next one is known as medicinal cannabis. Medicinal cannabis, that is medicinal hemp, means an extract of tincture cannabis. ठीक है. And next point is known as narcotic commissioner, means narcotic commissioner appointed under section 5. Understood. And next point is known as narcotic drug, also known as coca leaf, cannabis, cannabis also known as hemp leaf, opium, poppy straw, and include all manufactured drugs. Next point one is opium derivatives.
Opium derivative, also known as medicinal opium, prepared opium, and phenolphthalein alkaloids such as morphine, codeine, thebaine, and their salts. Next point is known as diacetyl morphine, likewise as a heroin and its salts. डाईएसेटाइल मॉर्फिन को हम हीरोइन गांजा भी बोलते हैं, ठीक है, आप लोग जानते होंगे. एंड ऑल प्रेपरेशन कंटेनिंग more than 0.2% of morphine or any amount of diacetyl morphine. ठीक है, हम 0.2% से मॉर्फिन डाल सकते हैं और डाईएसेटाइल मॉर्फिन. और नेक्स्ट पॉइंट इज ओपियम पॉपी. The plant of the species, also known as family Papaver somnifera L, and the plant of any other species Papaver from which opium of phenanthrene alkaloid which can be excreted and which the central government may be notification of the officially gazette declare to be a opium poppy for the purpose of this act. And next point topic is also the narcotic drugs and psychotropic substances consultative committee. The central government may constitute by notification in the officially gazette an advisory committee to be called as NDPS Act and Psychotropic Substance Consultative Committee. And here their instruction refer to the committee to advise the central government on such matter relating to the administration of the act as referred to by that government from time to time. मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर सकते हैं हम, ये इसके प्रोसेस हैं, ठीक है. हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओपियम एंड वहाँ से नंबरदार से लेना पड़ेगा. फिर डिस्टिंग ओपियम कलेक्टर हो गया. फैक्ट्री फॉर सेल्स एंड एक्सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि गाजीपुर और नीमच में है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है. यहाँ सेल होती है, मैन्युफैक्चर भी होती है गाजीपुर में और सेल भी होती है, ठीक है. अच्छा, अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोहिबिटेड एंड रिहेबिलिटेशन. जैसे भी कोई भी चीज़ है उस पर कर रोक लगाई जाती है, ठीक है. प्रोहिबिटेड आपने देखा होगा, प्रोहिबिलिशन का मतलब होता है रोक. किसी भी चीज़ पर हमें कोई भी एरिया है उसके पर हमें रोक दी जाती है. फर्स्ट पॉइंट इज आल्सो नोन एज prohibition of certain operation as per chapter 3rd section number 8, and no person is shall known as cultivate any coca plant or gather any portion of coca plant or cultivate the opium poppy or any cannabis plant, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरिंग सेल परचेज ट्रांसपोर्ट वेयर हाउस यूज़ कंज्यूम इम्पोर्ट इंटरस्टेट एक्सपोर्ट इंटरस्टेट इम्पोर्ट टू इंडिया एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया और ट्रांसफर इन नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस expect for the medical and scientific purpose and in the manner and extend to provision of act rules order made thereunder. भी मतलब जैसे कि हाँ, कोई भी जैसे उन्होंने कोई भी
कोई गाजीपुर में या किसी भी और फॉर एग्जांपल उदाहरण ला लो, किसी एरिया में आपको ओपियम या कल्टीवेशन करने के लिए अलाउलेशन है, ठीक है, लाइसेंस है, ठीक है, उसको 1 एकड़ का लाइसेंस मिला है, और अगर वो अपनी मनचाही खेती करे भी, हाँ ठीक है, अभी वो बाहर से हमको सरकार ने बोला भी 1 एकड़ ही लाना, तो वो 5 एकड़ लगा रहा है, तो उस पर प्रोहिबिटेड है, मतलब उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, तो उस पर कार्रवाई होगी, ठीक है। इसका ये मतलब होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज नोन एज पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू परमिट कंट्रोल एंड रेगुलेट। And next point is known as subject to provision under the section of chapter 3rd and section 9. Permit and regulate the cultivation and gathering of any portion, such cultivation and gathering being only account and coca plant and production processing transport import interstate export use to consumption of coca leaf. Second point is known as the cultivation being only account of central government of the opium poppy. Third one is the production and manufacturing of poppy, production poppy straw. Fourth one is the sale of poppy, opium poppy derivative from the central government factories and export from India or sale state government or manufacturing chemist. The manufactured drugs other than prepared opium but not including manufacturing or medicinally opium or any other preparation containing manufacturing drug from material which maker lawfully entitled to the processes। ठीक है, ये आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। इसके ऑप्शन क्या है, पेनल्टी क्या है, सेक्शन क्या है। अगर जैसे कि ये कोका है, कैनबिस है, उसको 10 से लेके फ़ाइन भरना पड़ेगा 1 लाख तक, ठीक है, ड्यूरिंग एक्ट 18C और कैनबिस 20, कोका 16 में। ऐसे ही अलग अलग ये दिया गया है। ये उसको किसी को अगर वो ऐसे खेती करता है या कल्टीवेशन या बेचता है ड्रग, तो उसको ये सज़ा हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसकी पेनाल्टीज़ हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इनको रीड करना है प्रॉपरली। ये हमारा जूरिस का जो सब्जेक्ट है बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, ये आप लोगों को याद करना है बिल्कुल आसान भाषा में, और हमारे जो एक्ट होते हैं फार्मेसी के, ये दिए जाते हैं इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड लेट्स गो रीड एंड गुड डे, स्टे सेफ एंड बाय।